हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रीडम हेल्थ चैलेंज डे 2। और शुरुआत करेंगे हम एक शानदार वीडियो से जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स को चेंज कर देगा। ये वीडियो मैं स्टार्टिंग से लगा रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो लेट ज्वाइन किया है। लेकिन आपको ये सारा का सारा वीडियो आपको पता चलना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग वीडियो है, तो इसे जरूर देखिएगा। और जो कमेंट करने को कहा जाता है वो लिखिएगा। आई एम हियर विथ यू, लेट अस सी आपके बीमारी की सच्चाई और इलाज की सच्चाई क्या है। क्रॉनिक बीमारी से तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखना चाहिए गाइस। हेलो गाइस, अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो, क्रॉनिक बीमारी से, तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखना चाहिए गाइस। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, पद्मश्री नॉमिनी, जेनेटिक एपिजेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, आज अपने 29 ईयर्स के अनुभव को और 42 ईयर्स के रिसर्च को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मुझे पता है आपने अभी तक बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हो, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, देन और दवाइयाँ और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स, ये सब करने के बावजूद आपकी बीमारी में जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, आज मैं उसका कारण बताऊंगा, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। साथ ही साथ आज से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्थ चैलेंज शुरू करने जा रहे हैं। आपकी बीमारियों को चैलेंज करेंगे, आपकी बीमारियों के जड़ पे काम भी करेंगे, आपकी बीमारियों को हराएंगे भी और आपको जिताएंगे और वापस एक बार वही खुशहाल, वही स्वस्थ जीवन का अनुभव भी कराएंगे। ये सब आज से शुरू होने जा रहा है, तो ये इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और डिसीजन अभी तुरंत लीजिएगा। चाहे डिसीजन हाँ हो या ना हो चलेगा, बट डिसीजन ज़रूर अभी लेना है। तो गाइज, आपने क्रॉनिक बीमारी है, शायद 2 साल से कोई तकलीफ में है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, और आपने अभी तक क्या किया है? अपने अभी तक गोलियां खाई है, दवाइयाँ खाई है। आप में से कुछ लोग एडमिट हुए हैं, इंजेक्शन्स लिया है, किसी ने ऑपरेशंस किया है। लेकिन आप देख रहे हो आपने सारी बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल किया है। दवाइयाँ, सर्जरीज, डॉक्टर, सब बाहर का इंसान ने बनाया हुआ, शायद मेडिकल साइंस का हर इन्वेंशन आपने इस्तेमाल किया है। लेकिन एक दुख की बात आपको बता दूं, ऊपर वाले ने बनाया हुआ आपके अंदर के सबसे बढ़िया बढ़िया इन्वेंशन आपने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए। और मैं बता दूं आपको, जब तक आप अपने अंदर के इन्वेंशंस को, जब तक आप अपने अंदर के सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आपको किसी भी बीमारी से वापस ठीक होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गाइस देखो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है इस वीडियो में कि जब तक आप अंदर के सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको ठीक होने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इसी पर काम करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे सुनते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। आप कहोगे सर आप तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो। जी हाँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम सिर्फ गोल गोल बात करके कोई अच्छा सा वीडियो बनाना है, कोई जस्ट आपके हैप्पीनेस के लिए वीडियो बनाना है, ये सब नहीं करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको सीधा दिशा दे, डायरेक्शन दे और आपको हेल्थ दे, बस। तो गाइस, ये कैसे मिलेगा? मैं आपको इसके पहले, आगे बढ़ने से पहले एक उदाहरण देना चाहूँगा। सपोज आपके अंदर का सिस्टम पूरा खराब है और आप बाहर से दवाइयाँ 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 ले रहे हो, क्या वो दवाई काम करेगी? एक और छोटा सा एग्जांपल, एक किसान है, किसान के पास बहुत अच्छा बीज है और वो बहुत अच्छा बीज उसने खराब ज़मीन में बो दिया या फेंक दिया, क्या ये काम करेगा? कभी नहीं करेगा। आप कहोगे सर किसान इतना बेवकूफ़ थोड़ी है सर। किसान पहले एक ज़मीन का टुकड़ा लेगा, उसकी साफ सफाई करेगा, उसकी मेहनत मशक्क़त करेगा, उसमें खाद पानी डालेगा, प्रॉपर शायद ट्रैक्टर चलाएगा, हल चलाएगा, मतलब वो ज़मीन की पूरी तैयारी पहले करेगा। उसके बाद वो जो बीज है ना, उसे बीज को बड़े सलीके से, तरीके से बोएगा। काश ये किसान वाला दिमाग हम भी लगा लेते। हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं और दवाइयाँ अंदर ठूसते हैं, लेते रहते हैं। कोई 5 गोली ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 15, कोई 20। आपका जो गोलियों का काउंट है ना, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे जो 32 मेडिसिन ले रहे, 50 दवाइयाँ रोज़ खा रहे, 64 टैबलेट्स रोज़ खाने वाले पेशेंट से भी मैं मिल चुका हूँ। और जब वो पेशेंट ने मुझे कहा, और हाँ वो सेलिब्रिटीज़ थे, ये भी बता दूँ, उन्होंने जब कहा कि क्या आप हमें ठीक कर सकते हो, मैंने कहा ये दवाइयाँ अगर कम करोगे तो मैं ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट से आपकी किडनी भी खराब हो रही है, आपका हार्ट भी खराब हो रहा है, और ठीक इसी तरह आपके साथ भी हो रहा है। आप जो दवाइयाँ खा रहे हो, आपको तो पता है कितने साल से खा रहे हो, क्या फ़ायदा हो रहा है उसे देख लीजिए। मैं दवाइयों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है,
वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, राइट। तो अगर आप ठीक होना चाहते हो तो ये बाहरी चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं और अंदर की चीज़ों पर फोकस करते हैं। गाइज, आपके पास सारे सुपर पावर्स है। आप जब कहते हो कि सर एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए और उन्होंने वो हड्डी को जोड़ दिया। गाइज, हड्डी को जोड़ा नहीं है, हड्डी को नज़दीक लाकर प्लेस कर दिया है, प्लेसमेंट कर दिया है। जोड़ने का काम नेचर करता है। किसी की स्किन में कट हो गया है, वो टाके लगा देता है, डॉक्टर के पास जाकर टाके लग के आ गए, 7 8 10 दिन बाद पता चलता है वो जुड़ी कि नहीं जुड़ी, क्योंकि जोड़ना डॉक्टर के हाथ में नहीं है, जोड़ना नेचर के हाथ में है, आपके हीलिंग सिस्टम के हाथ में है। तो गाइज, अगर आपको सही में हील होना है, अगर आपको सही में हेल्दी होना है, ओनली वन सोल्यूशन, क्योंकि ये सब अंदर होगा, दैट्स इट। ये अंदर की बात है, ये अंदर के सिस्टम में लिखा हुआ है, ये अंदर के सुपर पावर में दिया हुआ है। सारी शक्तियां आपके अंदर है, आप बाहर देख रहे हो। Imagine spending years and years building your reputation, your career and influence, and then by mistake you say something for 15 seconds and your entire career and reputation go for a toss. तो जैसे देखा गाइस आपने कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है कि आपको पता चलना कि सॉल्यूशन बाहर नहीं है। आप कितना भी ढूंढ लो, बाहर सॉल्यूशन ढूंढोगे, आप हमेशा हारोगे, हमेशा के लिए फेल होते रहोगे, और गारंटी है कि आपको फायदा कभी नहीं होगा। गाइस, कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं कि सर दवाइयों से अगर सही में ठीक होना होता तो कोई ये नहीं कहता कि क्रॉनिक बीमारियों का इलाज नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इलाज तो ढूंढ ही लेता। कितने लोग एग्री करते हैं मुझसे? राइट, एग्री। गोपाल सेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। गोपाल, सभी का ट्रीटमेंट बता ही रहा हूं मैं, और मैं तो कहता हूँ ट्रीटमेंट के पहले फायदा मिलना चाहिए आपको, ट्रीटमेंट बाद में करना। और आज कुछ ऐसे सेशन लेने वाले हैं हम जिसमें आपको फायदा होना शुरू हो जाना चाहिए। सुपर। आई एम चेकिंग योर रिप्लाईज, मुझे बहुत एक्टिव आंसर चाहिए। यू आर गिविंग सेकंड डे, सेकंड डे है आज आपका। और अच्छा, एक बात, कितने लोगों का आज फर्स्ट डे है वो लिखो फर्स्ट, जिसका सेकंड डे है वो लिखो सेकंड। लेट मी सी। क्योंकि कल हमने देखा बीमारी क्या होती है, बीमारी की असलियत। आज हम देखेंगे और एक नया कदम आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि क्या होती है ये बीमारी की, सोल्यूशन क्या होता है बीमारी की, और डीप असलियत जानेंगे, फिर सोल्यूशन जानेंगे। सुपर सुपर, ओके। कुछ लोगों का फर्स्ट डे भी है। गाइस, सबको इक्वली फायदा होगा, डोंट वरी। लिंक कल का बहुत अमेजिंग था, रिकॉर्डिंग जरूर जरूर देखना है आपको। अगर आप फर्स्ट डे आज हो तो कल का रिकॉर्डिंग मांगना है हमारी टीम से और जरूर देखना है। सुपर। तो गाइज, हम थोड़ा सा डीप जाएंगे, क्योंकि अभी तक आपने क्या सोचा, बीमारी मतलब जो रिपोर्ट में दिखेगी वो। अब आप सोचोगे सर इसके अलावा क्या होती है बीमारी। और मैं आपको बता दूं, जब तक आप बीमारी मतलब रिपोर्ट्स में दिखती है वो समझोगे, आपकी हार तो तय है, आपकी हार गारंटीड है। क्योंकि रिपोर्ट्स में जो दिख रहा है, या वैसे भी जो दिखता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैं रिपीट करूंगा इसको, जो दिखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसके पीछे कुछ शक्ति होती है जिसके वजह से वो दिखता है। जैसे एग्जाम्पल, आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, लेकिन आपका शरीर दिख रहा है, आप शरीर की वजह से यहाँ नहीं आए हो, आप माइंड की वजह से आए हो, माइंड नहीं दिख रहा है। आपका सोल है वो भी नहीं दिख रहा है। ये पूरे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल एनर्जी है, नहीं दिख रही है। ग्रेविटेशनल पुल है, नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, नहीं दिख रहा है। वो सूरज के आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, नहीं दिख रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं वो? क्या सूरज के हाथ में कोई रस्सी है कि वो सबको घुमाने की कोशिश कर रहा है? नहीं। दुनिया की सारी पावर्स अदृश्य है। आप कहते हो सर वो समुद्र में लहरें उठती है, हाई टाइड लो टाइड, ये चांद है ना, चांद के पावर के कारण कुछ रस्सियां बंधी है वहां पर, कठपुतली की तरह उसे चांद हिलाता है। गाइस, सारी की सारी पावर्स इनविजिबल है, सारी की सारी ताकतें इनविजिबल है,
आपको बस दिखता है उसका रिजल्ट, रिजल्ट और रिजल्ट। सेम स्टोरी बीमारी में, आपकी असली बीमारी आपको पता ही नहीं चलती है क्योंकि वो अदृश्य है। अदृश्य है मतलब आप रिपोर्ट्स में ढूंढ रहे हो, रिपोर्ट्स में कभी वो आएगी नहीं। तो रिपोर्ट में जो भी आता है वो रिजल्ट है। जैसे एग्जाम्पल, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, अब आपको यहाँ रिप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, अब ब्लड प्रेशर आया 180 बाय 110। सो मुझे बताइए ये बीमारी है या बीमारी का एक रिजल्ट है? So guys, let me continue this in English because we were doing it in English. So some people said कि सर हिंदी में भी लेना, but I will continue with English. Whatever the power is, it cannot be seen. It can be willpower, it can be gravitational power, it can be electromagnetic power, it can be any damn power in the world. Power will never be seen. Or real power is in the power, the force, the power, the energy, and it is completely invisible. Your disease is also a energy. आपकी बीमारी भी एनर्जी है और वो इनविजिबल एनर्जी है। ये समझना जरूरी है आपको। अब मैं बताता हूं वो कहाँ कहाँ रहती है, राइट? उसके पहले बस ये जानना जरूरी है कि ये इनविजिबल है। गाइस, कितने लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं कि असली बीमारी इनविजिबल है, हमें उसके बस रिजल्ट दिखते हैं? किसी का बीपी बढ़ गया सर, सर माय ब्लड प्रेशर इज 200, some will say my blood sugar is 400, somebody will say my cholesterol is 300. So you are just focusing on some reports, not a disease at all. You don't focus on disease and therefore you don't get a result. In fact, let me allow me to tell directly, you don't deserve the results. You don't get me, you don't deserve the result because you are not even focusing on the disease. Let me give you another simple example. There is a tree. If I cut a tree, it will come again. If I cut leaves, it will come again. If I cut fruits, it will come again. If I cut branches, they will come again. Whatever I cut superficially is going to come back again. The simple common sense. Same with the disease. If you continue to control, the disease is going to come back again in the same way, again and again and again. In short, it will never go because effect don't have the end. Let me repeat. Effect don't have the end, only cause will have the end. Right? Only cause will have the end, and the problem is that the medical science only looks after reports, scans. Even if you come to me, I tell you you have this disease. The first thing you will say, doctor, can you please tell me what reports should I do? Gone. You will never know the disease in reports. You will never ever be cured. And you will say, okay, sir, how do I know I have a disease? For example, if you have a headache, even if you do the scan, there is nothing in headache. Does it mean you don't have a disease? If there is a recurrent abdominal pain, there is a body ache, you feel low, you have low energy, all the reports show normal, everything is normal. Does it mean you are a liar? Does it mean you are a dramebaz, you are doing drama? Not at all. It only means the real disease is invisible, it is not seen in the report. Only when the diseases have progressed so far, only when the diseases have progressed so far that they produce the visible physical results, then you will see the results. That means when you start seeing the disease in the reports, it is already very, very, very late. How many of you are with me? Right? Late. If you understand this, very important, guys, because otherwise you will not understand what the disease is. Right late. If you understand this, right late, LATE. Super, super. So now let us see, let us go deep into what
is exactly, okay, somebody says repeat. Okay, I will repeat. Initially, when the disease starts, there is nothing physical about it. It is always functional. It is always a power. It is always energy. For example, just imagine somebody is having the imbalance of energy. He will feel weak. His energy will be low. His thinking will be clouded. And he is not feeling at ease. He is not feeling comfortable. But still, reports will show normal. We have plenty of people having body aches, weight problems. Their reports are normal. So does it mean they are not talking truth, or they are liars, or they are just doing, I will say, hysterical behavior? They are deliberately mimicking the symptoms. No, not at all. They have a problem. Only thing is that it is not visible finally. For example, if I have a farmland, बहुत बड़ा खेत है मेरा, 100 acres of farmland, and I happen to sow mango seed all over the farmland. And next day I go there to see whether there are any plants. What will be there? Tell me. I just go second day. I have sown the seed. Second day I go there and try to see what is there. And I'm okay. If I open that area, I can find the seed. But if I don't open, I just see the farmland. What is there? What is available? What is visible to me? Plain, nothing. But is there a seed? Yes. Is the process already started? Answer is yes. Will there be a plant one day? Answer is yes. Will there be a lot of mangoes one day? Answer is yes. Same is with your disease. When your disease starts, it is just invisible. Reports will show nothing. After few months and years, the reports will show something. But the disease have started much before the reports come positive. So initially problem is invisible, later it will become visible. When it is visible, we are already late. Therefore, if you depend only on reports, अगर आप सिर्फ reports पर depend होते हो, तो guys मैं आपको बता दूं, आपका भविष्य खतरे में है. आप ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि रिपोर्ट्स में रिजल्ट है. रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप एग्जाम देते हो, रिपोर्ट कार्ड आता है ना, रिपोर्ट कार्ड में दिख जाता है कितने मार्क्स मिले, बस उतना ही है रिपोर्ट मतलब. इट इज जस्ट अ रिपोर्ट, राइट? सो नाउ लेट मी टेल यू, इफ डिसीज इज नॉट इन द रिपोर्ट्स, फिर डिसीज कहां पर है? So there is a very interesting book. You can write the name of the book. It is a lovely book called as Anatomy of Illness. Anatomy of Illness. In fact, there is a movie on this Anatomy of Illness also. There is a movie. Now, what is Anatomy of Illness? He says, the author, I'm not remembering the name of the author exactly, but Anatomy of Illness, the author says, whatever you see is not the disease. It is just the reflection or the final output of the disease. Then what is the disease? Okay, let us see where the disease resides. And with this, I will also revise a day one just quickly within 2 minutes. So we started with the Freedom Health Challenge, 3 days for fighters and challengers. मैंने करीब बता दिया था, this is not for normal people, one who look for only medicine, 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 one who do not apply common sense, जिसको दिमाग बिल्कुल भी लगाना नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, right? जिसको सिर्फ दवाई चाहिए, उनके लिए भी नहीं है. If you say I am fed up of chronic disease, I want to enjoy a disease-free life, I want medicine-free life, I want to be free from deadly side effects of medicine, and if you are looking for long-term and permanent solution, then you are at the right place. Guys, how many of you are looking for temporary solution, right? T. How many of you are looking for permanent solution, right? P. P for peacock. So T and P. Whatever you are looking for, T or P. If you are looking for a temporary solution, let me tell you, this is not for you. If you are looking for a long-term and permanent solution, then definitely you are at the right place. Super. That is so amazing. Then you are at the right place. So let us take a deep dive into what exactly disease is made of. And you will be surprised and shocked. The disease is made of something
more deeper, something more subtle, something more inert. It is not visible. I also discussed about this definition of health, and you must watch part 1 where I have discussed this in detail. Thanks to World Health Organization for giving such a beautiful description of health. Unfortunately, we don't follow this. We are also seen that the human being is equal to body plus mind and spirit. All the three things put together make a human being, and we also discuss about that. Let us quickly move to the actual health. What is actual health? Actual health is not just about your reports. If you believe reports are the only thing you have to treat, you are already in a big problem. Because if you just treat the report, if you see this, if you only treat the report, then you will never see mental health in reports. For example, you may be angry, you may be irritable, you may be having hatred, you may have a breakup, disappointment, quarrels, divorce. Nothing comes in report, but you know this everything will cause the stress and cause the physical disease. How many of you agree with me that mental health is important, right? IMP. Because I have a very simple example. If somebody he is doing all the reports and all the reports are coming to normal, sare reports normal aa gaye, but that boy or that man is having, he is very sad, he is very depressed, he is very angry, he wants to commit suicide, and he don't want to live, he wants to run away from the home, he wants to do somebody's murder. Oh my God, he's sick already. But then nothing will be seen in the blood reports. Then health, along with mental health, physical health is important, but emotional health is very, very important. Again, will not be seen in the reports. Sexual health, very important, guys. Let me tell you, majority of you will have some problems at the sexual sphere. In fact, this is the research done at a very large level, and people say almost 60 to 70% people will have some kind of a sexual problem before the disease or after the disease. Definitely they will be having. Then relationship health, then financial health, social health, very, very important. You are going to see about social health, then holistic health, then anti-aging, and then longevity. So you see, there are so many things which are very, very important for your health, not just your reports. So now, if you really want to be healthy, you have to see that you are getting healthy at all the levels, and the program which we usually do with people where we say, don't take our treatment first, correct all these levels. If you correct all these levels, then you are going to get results, results, and results, right? So you have to first see that you are correcting all these levels. Okay, guys, how many of you agree with me that all these are important, right? All. If you agree that all these are important, right? All. Superb, superb. That's great. Guys, I am seeing more energy today. That is fantastic. Be super active. One who is active actually works on his brain. When you are just listening to me, your ears are active, but when you write it, it gets imprinted in your brain. So write it whenever I say write it. Have a diary and note down, take your notes and write in the chat as and when I say. Because if you write, you will get more results. If you don't write, you will get less results. Okay, so now let us move ahead. And now, guys, we are going to dive deep inside the actual problem. Let me show you, and then we will do a activity which will show you some kind of changes instantly. The silent suffering of chronic disease. See, guys, chronic disease is beyond signs and symptoms and reports. Chronic disease is not just a physical condition, it is a life consuming struggle. Medications, what you take, just suppress the symptoms but never address the root cause. Every part of you is suffering mind, body, emotion, relationship, career, and wealth. How many of you agree with me? Right? Agree? Come on.
If you agree with me, write agree. So guys, everybody is agreeing. That is so fantastic, so wonderful. Superb, superb, superb. बघतो. So guys, see, everybody agrees. But when it comes to treatment, what you will do? You will just pop the pills. Whenever you go to any doctor, you will just say, okay, मुझे कुछ दवाई दे दो डॉक्टर साहब. That's it. I want some medicine. Ayurvedic, homeopathic, allopathic. Whenever I talk to people, they will say, sir, which kind of medicine you give? And I have an amazing answer. We at our center, let me tell you guys, I am having 29 years of clinical experience. At our center, we have homeopathy, allopathy, Ayurveda, naturopathy. We have clinics, we have hospital. My wife is an allopathic specialist. So we have complete allopathic setup. We have operation theater. We have everything. So question is not what I have. Question is that what you need. Now this is the missing link. So now when I am taking you to the journey, let me show you something interesting. Let me show you. So now when you think, okay, my disease is in reports, I give you 0 marks. Now let me show you where your disease is. If you see the disease, this is the main problem. You have a mind problem. You have a mind problem. So the first problem which you have is mental pain. When your mind becomes a enemy, right? So now you see you have brain fog. Doctor sir busy. You have difficulty in concentration, you have forgetfulness, you have anxiety, you have fear, you are in stress, you have tension, you are overthinking, you have fear of disease, fear of death, fear of attacks, fear of failing health, fear of medicine, side effects. Oh my God. How many of you agree with me? Sir, mind is full of negative crap. Right? Crap. CRAP. Right? If you agree with me, sir, this is true because I have so many things in mind. There is doubt, there is a fear, there is anxiety, there is depression, there is sadness, there is fear of death. I worry a lot about family, I worry a lot about my kids, I worry a lot about myself. I am in constant stress. And guys, if you are in a constant stress, now let this sink in, very, very important. If you are in a constant stress, is there really any chance of result? Can you get a positive health with a negative mindset? Say yes or no. Can you get a positive health with a negative mindset? Never ever possible. Let me see your answer. Let me see your answer. Can you ever get a positive health with a negative mindset? No. Then why don't anybody work on mind? Not at all. No chance. You may be spending 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, 10 crores doesn't matter. If your mind is holding all the crap, your body will show all the crap. So, one part where your disease is hidden from you, it is just mind. And what do you think? Sir, I got all the mind symptom after my disease. No, my dear. There were some kind of mind problems even before your disease, because the difference between a human being and animal is only mind. And there are most of the diseases which happen only to the human being, not to the animal, just because of the mind.
because this mind will hold all the grudges, all the regrets, all the guilt, all the traumas, all the past bad experiences, everything negative, mind will hold. You said, no, sir, I don't remember anything. Okay, but it is in your subconscious, in your unconscious. You will remember only if it is in conscious. So, subconscious, unconscious is not available for you, and the real problem lies in the subconscious and the unconscious. Guys, how many of you agree with me, right? Agree? Because this is the most important part where your disease is sitting, and just actually it is having a remote control for all your diseases. And then comes emotional pain. You feel like a burden to family, you feel worried, you feel sad, you feel nervous. It looks like, oh my god, I am a burden to my family. I don't want to live such a life. It is better to die. Why to have such life? My why God chosen me for this? What is my fault? Why me? Your mood swings are there. You are silently suffering. You have hidden tears, and nobody have time to even think of this aspect. Everybody is worried. आपका शुगर कितना है? How much is your blood pressure? How is your scan? Oh my God. They are the result. These are the real cause. Okay, let me prove is this a cause or not. If you have a lot of stress and then the blood pressure is rising, should you just take a blood pressure pill, or should you work on the stress and reduce the stress? What is the common sense? First, taking a pill. Second, reducing the stress. Right? One or two. If you are agree with, okay, sir, pill lena chahiye. Write one. If you say, no, sir, stress par kaam karna chahiye. Write two. And this is common sense. I am not talking anything from the Mars. I am not talking any knowledge brought by Sunita Williams from the space station. I am talking common sense. But nobody works on this. But we work extensively. And therefore, we have a promise. We will give result before the treatment start. We have program built in for that. And I am going to introduce you to the amazing program which will actually work on your all the areas of the root cause and disease itself. We don't work only on the result. You are taking tablet for the result, but we work on the actual you. We work on the person, we work on the mind, we work on the root cause, we work on the emotions, we work on the genetics, we work on the epigenetics, we rebalance your systems, we work on the energy. Oh my god. So many things. How do you do? We have developed a system. But unless you do this, there is no chance you can recover. Not at all. So let me quickly move ahead with this silent suffering, silent burden kind of feeling, your shame, your guilt, your self doubt of why me, you will never ever recover, because these feelings are sufficient enough to cause disease, to maintain the disease. And about the physical pain, I won't talk a lot because you focus on the physical things, but a social pain. Most of you feel embarrassed in front of the people. You think, oh my god, what people will think about me, that I look sick. Or even if I don't look sick, they will say, oh, you are not looking sick at all. Yeah, why you are behaving like this? You are not sick. Are you a bluff master? Are you a liar? You don't look like sick. But only you know what is happening inside, right? So social life is completely collapsed, and that is very, very painful. Social life, we a human being is a social animal, and social life is very important. Then marital pains. Marriage is a beautiful relationship based on trust and love. But as soon as you face diseases, the partner becomes a caretaker. It no longer remains a companion. The intimacy is lost, all the emotions are lost. Just care means the husband or wife, they become a nurse or a brother. They are just caring for a disease. Then the partnership, the marital relationship, the beauty and sensuality of the marital relationship is completely lost. Then sexual pains, no one talks about. No one will talk about this, because again, this cannot be seen in the reports. You cannot do a CT scan and say, oh my god,
you are sexually deprived, or you are not sexually satisfied, or your sex is not happening properly, but then it is a big pain. I'm not talking about you, just talk about general. Is it not a big pain? Being a non-performer at the sexual level or being unsatisfied at the sexual level is a big pain. If you agree, right? Big pain. And the researchers have shown that more than 60 to 70% people have some kind of a sexual problem before, during, or after the illness, but nobody will address this. We have the program where we address this. Then comes lost interest, lost libido, lost self respect, lost love, and the sexual problems like premature ejaculation, erectile dysfunctions, and all sorts of different things. And the biggest problems happen at the education level. Just imagine a student getting a pancreatitis problem, or a student getting a genetic problem, or a student getting a diabetes. His complete career is going to be just haywire. And then comes career and business pain. I think this is the biggest loss and a disease can give, because business and career both depend. Business, career, job, everything depends on your health. If you are in a job but not a good health, then you cannot earn, you cannot do your work in a perfect way, you cannot grow in life, you cannot grow in your money, you cannot get your promotions. Same with the career gets completely compromised. And if you are an entrepreneur, businessman, then you know the pain, what kind of pain you go through, because being a businessman and entrepreneur itself is a painful, it is a very lot of struggle, deep kind of a struggle. And if health is not supporting, everything is going to be in a drain. Maybe somebody is losing lakhs and lakhs of the worth of career, or somebody is losing crores of the business. Guys, can I ask here, how many of you are doing some job or a business or a housewife? Can you just write it? Job, business, or HW for a housewife. Write it. Let me just know what kind of people are here so that I can make it more relevant for you. Because business people are the people who understand that health is actually much, much more than wealth, and they will understand, oh my God, most of they are businessmen. Superb, superb, superb. Because you will understand, if you are not healthy, your mind will be constantly involved in doctors, reports, and pains, problems, anxiety. And as you know, business is a mind game. If your mind cannot focus, your business cannot grow. And this is just take away your focus from the right things and put all the focus on the right thing, wrong things. So you will have missed opportunities, reduced productivity, fear of losing job, business stagnation, dreams put on hold due to never ending treatment. Guys, therefore I say, whosoever joins with us, let me tell you, diseases are costly. Diseases are costly depending on what the disease is. For example, if somebody is having kidney failure, he is going to spend 20 lakhs for having his kidney get transplant. Somebody is having pancreatitis, he will be spending 5 to 10 lakhs. So guys, diseases are going to cost huge. Somebody is having liver failure, he will spending 50 lakhs. So disease will cost huge. So when somebody takes any other treatment in the world, now this is very important, guys. You have to write in this in diary. Take your diary and pen. If somebody takes any treatment in the world or any medicine in the world, it is a health expenditure. वो खर्चा होता है. But if somebody joins with us and works completely a 360-degree work, tomorrow I will tell you what exactly we do in disease, right? How we do 360-degree approach, how we work on every aspect of you, how we make you physically, mentally, spiritually super powerful, and how your business will improve, how your mindset will be different, how you can actually earn much more than what you pay us. So let me tell you, whenever you take treatment or medicine from anybody else, it is an expense. But once you join with us, it is an investment. So somewhere you spend 10 lakhs, 10 lakhs are gone and you have not got the health. But if you pay me 10 lakhs, you will earn 20 lakhs because of that investment. And therefore, I always say,
Anybody joining with us actually is getting all the treatment and all the program for free because he is going to make more money out of it. Guys, how many of you understood, right? Free. So guys, whenever you plan to join any of your program, let me tell you, it is actually free because you will be paying something and you will be getting health, plus you will be getting lots and lots of happiness, plus you will be getting your concentration back, your confidence back. You'll be focusing on your business, you'll be focusing on your job, you'll be doing better business, better job, better performance, better productivity. You'll be earning much, much more than what you paid us. And then the happiness you get, you cannot even count in money. The health you experience, you cannot even count in money. And everybody else give you tablets. We give you results. We don't deal with tablets, right? The only thing is that you have to invest first. For example, if somebody says, so if you, sir, if you say you are giving it free, right? Why don't you give free in starting? Because it will not work. Any investment in the world, you have to put some money in first, then it gets multiplied and come back to you. It can be any investment. It can be gold, it can be real estate, it can be business, it can be maybe stock market, it can be mutual fund. You have to initially invest some money and then it becomes multiplied and come back, right? So investment works like that. Similarly, the best investment you can make in life is dash dash dash. Guys, fill in this sentence, fill in the blanks. The best investment you can make in your life is your investment in dash. Fill in the blanks. Let me see, let me check. Oh my god, somebody have written you for free. No, we will ask investment in yourself. Yes. Answer is perfect, Mr. CK Patel. That's perfect. So if you invest in yourself, invest in health, that will give you highest return. If you ask me, sir, okay, how much return we can get? If you we talk of ROI, there are a lot of business people. So let us talk of ROI also, right? So if you invest in gold, okay, let us go behind again. If you invest in saving account, you will get 3%. If you invest in fixed deposit, you will get 6% to 8% or 9%. If you go for gold, it is 8 to 9%. If you go for mutual fund, it is 15%. If you go to stock market, it is 20%. If you go to real estate, it is again around 20%. So you see, most of the investment avenues are giving you the returns up to the 20% at the most. But once you invest in your health, once you invest in your health, and once you invest in yourself, then there is no limit on how much returns you can get. It can be 20%, 30%, 50%, 100%. In fact, most of our people have earned back more than 100% returns. They get health, they get wealth, they get happiness, they get peace of mind, they get a good sleep, and this all happens instantly. This all happens even without medicines, without starting our treatment. How many of you feel this is amazing? Right? Amazing. If you feel this is amazing, right? Amazing. So let us go to one more slide and then we'll go for a short activity because we don't have a time for a long activity. But still, I want you to experience what it means to be healthy. I want you to experience. Super. Then comes financial pain. Guys, finances will always end if you don't end disease. You see, diseases are there to kill you and your finances both. You have only two choices. Either you kill the disease or disease kills you. Either you finish the disease or disease will finish you and your finances together. Endless medical bills, no permanent relief. Insurance covers the medicine, not the healing, right? So if you really want to become healthy, you have to move away from the insurance. Insurance will never cover healing and getting healthier. Insurance will cover taking medicines and surgeries. So finally, the sickness you have is guaranteed. It's a guaranteed sickness.
guaranteed expenses, and guaranteed unhappiness. Hopes fade, dreams are shattered, and future is uncertain. So, are you living or just surviving? I asked one patient, what are you doing? I said, nothing. He said, nothing. So I said, how do you enjoy your life? I said, I never enjoy my life in past 5 years. I was taken up aback. Then I asked him, are you living or surviving? He says, just surviving. Then I asked, why? Why are you just surviving? And the answer was shocking. He said, I'm just surviving because I am not yet dead. And that shook me completely. Most of the people don't have any purpose in life. Most of the people have all their dreams and goals end, and once goals end, dreams end, purpose is fading away, you will never recover from your disease because there is no purpose for you to become healthy. And therefore, if you see, all the business people will say start with the why. Nobody in health will say start with the why. And we are the only people who work with the why, work with your dreams, work with your goals, work with your purpose. Because when we work on you, your complete system of mind, brain, healing system, your energies align to make you healthier and healthier. And results will be instant. So we use all of your powers, absolutely all of your powers, and you will be winner just within no time. So I am introducing a 100 days challenge. I know your disease may be 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, and your disease is going to stay for further 5, 10, 20 years, even till the last breath of your life, and finally will spoil all the organs. But here I introduce you something very amazing. It will not be costing lakhs and lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs. No, it is not going to cost that. But definitely it is going to save 5 lakhs, 10 lakhs, and 20 lakhs and lots of misery for you. It's going to save a lot of things. So, guys, if there is such kind of a thing which is not a treatment, you have to do it from home. How many of you will be actually interested in taking action? Can you write action? It is not compulsory. I know everybody, I cannot accommodate. I will be taking only few people because this is about working on you. I cannot take everybody because I will be taking only committed people. Only committed people. And guys, before proceeding ahead, let me also tell you I am Dr. Ravi Vairagade, practicing since 29 years. I am practicing since 29 years with 42 years of research behind this Insta Healing protocol, and we do Insta Healing in an amazing way. In fact, some of our Insta Healing participants are already right here, and in front of them, I am telling you results. Now this is going to be amazing. Huh? Okay, guys, can I ask who are here who have already joined us in our treatment? You're already taking our treatment, who you're already doing our 15 days program, 100 days challenge, right? Champion. We are into champion programs, right? Right, champion. All of those who you are here, right, champion. Those who are in our online program, offline program, treatment program, right, champions. Let everybody know that the champions are already here. So, guys, healing is not in a pill, it is within you. And you have never got healing, you have never got healthy because you have never worked on you. Let me take the liberty to say, till now you have taken medicine, but you have never taken a treatment. I am repeating, till now you have always taken medicine, but never taken a treatment. I wanted to do activity today, but probably I don't know whether the time will permit. But let me see how many of our champions are here because they are wonderful people. There was a time when they were just like you in doubts whether to go ahead or not,
whether they should begin this journey or not. They were all the medicine kind of people. Oh my God, there's so many people. Setting Ledo is already there. Kiran is already there. CK Patel. I'm a future champion. Oh, CK Patel. Wow, I love this. Superb. Sudha Chitrakar and Setting Ledo. Yes, 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 yes. And Shekhar Adhikari is also there. And just a minute, let me check who else is there. Because I'm looking for somebody who is right now here with me. So where is she? Oh, I am missing her probably. Okay. So she is suffering from autoimmune disease and kidney failure stage 5 and getting amazing results. So I will help you to get introduced to one of the champions. Shekhar ji, शेखर जी यू कैन अनम्यूट. देखो आप अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? गाइस आई वाज हाँ सर। अबाउट. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. शेखर जी अभी आप हमारे कम से कम 50-100 लोगों से तो मिल चुके हो ऑनलाइन ऑफलाइन पकड़ के, राइट? हाँ जी। तो आप थोड़ा इनको गाइड करोगे कि मेडिसिन जरूरी है कि इंसान का खुद पे भरोसा जरूरी है? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेडिसिन में जो है हम किसी ना किसी ऑर्गन को पकड़ के बैठे रहते हैं, जबकि इलाज जो है माइंड बॉडी और सोल है। जब तक आपका माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका कंप्लीट बॉडी हीलिंग नहीं हो पाएगा। सो ट्रू. तो ये मैं पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहता हूँ कि रिपोर्ट्स के पीछे ज़्यादा ना दौड़े और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें। अपने माइंड का जो सेटअप है उसको चेंज करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, अच्छे एफर्मेशंस करें। इससे कहीं ज़्यादा आपको फायदा होगा बगैर कि किसी पिल्स के। सुपर्ब शेखर जी. एंड व्हाट इज सेड इज राइट. गाइस मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने 2 लाख खर्चा किया होगा, 5 लाख खर्चा किया होगा, 10 लाख खर्चा किया होगा, या फिर वो 50 लाख भी खर्चा कर दिया होगा, आई विल प्रॉमिस यू आपको उससे ज्यादा फायदा ये प्रोग्राम में मिलेगा. एंड इट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट लैक्स एंड लैक्स रुपीज, राइट? तो कल गाइस मैं आज नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपकी एक्टिविटी आज करूँ. कल मैं और डिटेल में आपकी एक्टिविटी करूंगा, बट आई रियली वांट टू डू इट टुडे. अच्छा, सेरिंग लेडो के साथ उनकी 2 बेबीज भी है. क्या बात है, वेरी गुड, ये अमेजिंग है. ये हमारे ऑलरेडी सब चैंपियंस है, हैप्पी चैंपियंस. क्या बात है. सेरिंग लेडो दे आर वेरी वेरी क्यूट. वेरी क्यूट. सुपर. सो गाइस चलिए, एनी क्वेश्चंस हो तो बता दीजिए. आई विल आंसर द क्वेश्चन एंड देन गो फॉर एक्टिविटी. चलिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है. हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस मी टू बी हियर टुमारो? राइट, प्रॉमिस. कल का सेशन लास्ट रहने वाला है. हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस टू बी हियर? और कल आपको गाइस तैयारी से आना है, बिकॉज मैं आपको ऐसा ऑप्शन दूंगा कि आप वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वी हैव अमेजिंग माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम. और वो प्रोग्राम ऐसा है गाइस कि अगर आपने उस प्रोग्राम को कर लिया तो मैं बताऊं, आप जो भी इलाज कर रहे हो, मैं नहीं कहता हूं आपका इलाज बंद करो, आप जो भी इलाज कर रहे हो आप उसके रिजल्ट्स को अपने आप ही चेंज कर दोगे. इट इज सच अ पावरफुल प्रोग्राम, राइट? तो रिजल्ट आपके हाथ में, दवाइयों के हाथ में होता तो अब तक मिल जाता. यस विनोद कुमार, कैन यू पुट योर वीडियो ऑन? Will we need medicine after the program? It हेलो। depends, Anjali, it depends from person to person. Yes, Vinod ji. हाँ जी। अच्छा, आप कैंसर का इलाज कैसे करते हैं? हमारे पास इलाज तो, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू. हमारे पास इलाज हर तरह का है. यहाँ पर जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंसान को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इंसान हो, इंसान पर काम करो पहली बार. हाँ?
पहला बताना चाह रहा हूं कि आप इंसान हो, इंसान पर काम करो सबसे पहला। राइट। हाँ जी। लोग क्या करते हाँ हैं, दवाई जिंदगी भर खाते रहते हैं, और ऊपर से हाँ मैं पूछूंगा आप भगवान को मानते हो, बोलेंगे हाँ। राइट। हाँ जी। आप बोलोगे फिर भगवान कहाँ है, तो आपको पता ही नहीं भगवान कहाँ है। अरे भगवान आपके अंदर है, सिस्टम आपके अंदर है, हीलिंग सिस्टम आपके अंदर है, इम्यून सिस्टम आपके अंदर है, सारा सिस्टम आपके अंदर है, और आपने अंदर ठीक कभी है। काम नहीं किया। तो हम सबसे पहले लोगों को सजेस्ट करते हैं खुद पर काम करो, और उसके लिए बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है हमारा 100 डेज चैलेंज, जो कि मैं कल सबको बताने वाला हूँ, एंड एवरीबडी हैव टू बी रेडी फॉर दैट, जिसको ज्वाइन करना है। राइट। तो कैंसर ठीक का है। इलाज हम अलग तरीके से करते हैं हमारे पास। माइंड प्रोग्राम के साथ साथ बता दूं, हम माइंड पर कल मैं बताने वाला हूँ, ये डिटेल में बताने वाला हूँ, वैसे भी अभी शॉर्ट में नहीं नहीं नहीं, ये सारा इलाज ऑनलाइन करते हैं या ऐसे ऑफलाइन भी होता है? सारा ऑनलाइन, सारा ऑनलाइन। अच्छा। we have all treatment online, only few people we advise to come, कि उनको आना पड़ता है, अदरवाइज कहाँ हमारे 90% कहाँ पे? लोगों को कभी आना नहीं पड़ता। कहाँ पे? अभी हमारे सेंटर, आप कहाँ रहते हो? हाँ, पंजाब लुधियाना में। पंजाब लुधियाना में हो तो हमारा मुंबई में सेंटर है। दिल्ली में हमारा रेगुलर सेंटर नहीं है, कम समटाइम्स कम टू दिल्ली, एंड देन वी हैव सेंटर इन कोलकाता एंड नागपुर। लेकिन आपको आना पड़ेगा कि जरूर नहीं है अभी। राइट। तो कल मैं बताऊंगा डिटेल में कैंसर का इलाज हम कैसे करेंगे, कल बताऊंगा, चलेगा? यस मिलिंद दिगंबर। यस मिलिंद दिगंबर। हेलो। यस। ये पहले ठीक हुआ है कहीं आपसे कैंसर के? आपने चेक किया हमारा वेबसाइट पे? नहीं। अरे करो ना। अरे शायद, हमको तो शायद मैं हमको इतना आपके, नहीं अरे आता इतने है। इतने वीडियोस आते हैं, किसी भी हाँ। वीडियो पे चले जाना, यूट्यूब पर लेके जाएगा आपको वो। यूट्यूब में अच्छा 1000 वीडियोस है, 400 से ज्यादा तो टेस्टिमोनियल्स है। और हमारा जनरली जो फोकस है ओनली क्रिटिकल बीमारियों पर है, कैंसर, किडनी फेल, लीवर फेल, इसी पर ज्यादा काम है हमारा। अच्छा। हाँ जी। इसमें टाइम कितना लगता है वैसे? हर एक को अलग लगेगा, हर इंसान अलग होता है। हाँ, वो तो ठीक है अंदाजा। कोई भी क्रॉनिक बीमारी पकड़ लो, 1 से 3 साल। अच्छा हाँ, और आपको इलाज के पहले ही फायदा जो चाहिए वो तो हम इवन 15 दिन में दे देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब इसके लिए स्पेशल क्लासेस लगती हैं, क्या है आपका? नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने? इसके लिए स्पेशल क्लासेस लेते हो या कैसे करते हो? बहुत कुछ करते हैं हम, डोंट वरी, कल बता दूंगा मैं सारा का सारा आपको। चलो ठीक ठीक कल मैं ठीक पूरा ठीक। पूरा ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हाँ यहाँ जी। मैं आपको सबको बताने वाला हूँ एक 100 डेज का चैलेंज, क्योंकि आप करने वाले हो। मतलब देखो, मुझे बताओ, अगर कैंसर है तो आप 5-10 साल इलाज करोगे, आखिरी सांस तक इलाज करोगे, यस और नो विनोद जी? हाँ 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 जी। किसी को डायबिटीज है तो 20-30 साल इलाज करेगा, वो 40 साल इलाज करेगा, मरने तक इलाज करेगा। ठीक है। तो उसकी जगह 100 डेज चैलेंज लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितना फायदा आज तक नहीं हुआ उतना हो जाएगा आपको, उससे बेहतर महसूस होगा आपको। कैसा ठीक है लगेगा ये ठीक है। बताओ? नहीं ठीक है। है ठीक है। ना? ठीक है हाँ हाँ। तो गाइस जिसको और भी वो भी अपने, ऐसा है ना, बिना दवाई के तो फिर वो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा ना उसका कोई? जीरो, वेरी गुड क्वेश्चन विनोद जी। जीरो हाँ साइड हाँ हाँ इफेक्ट्स, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हो, दवाई खा खा कर अपनी बीमारियां खुद तैयार भी कर रहे हो ना, हाँ हाँ ठीक है। तो हम उससे भी बचा लेते हैं आपको। तो तो इसमें हमारा डाइट इलाज, चार्ट, इसमें डाइट डाइट वगैरह भी बताते हो या क्या होता है ये? सब कुछ, अच्छा। हम इस धरती की, इस ब्रह्मांड की हर वो चीज करते हैं जिससे हाँ आप हाँ हेल्दी हाँ बन सकते हो। ठीक है। सिर्फ दवाई खा के कोई हेल्दी बना ही नहीं आज तक। जबकि मैं हाँ बता ठीक है दूं ठीक है आपको, ठीक है। मेरी वाइफ खुद एलोपैथिक डॉक्टर है, हमारा खुद का हॉस्पिटल है। राइट। तो हमारे अच्छा क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, ऑपरेशन थिएटर है, कैंसर सर्जरीज हमारे यहाँ पर अच्छा। होती है। लेकिन हम क्या प्रमोट करते हैं, यार देखो, पहले आप इंसान हो। विनोद जी, आप इंसान हो कि नहीं, यस और नो? हाँ जी हाँ जी, जैसे जैसे, हाँ जी हाँ जी। तो पहले यार बिल्कुल सही इंसान, है। पहले इंसानों वाला इंसान का इलाज तो हाँ करो। हाँ ठीक है। कोई इंसानों का इंसानों वाला इलाज करता ही नहीं है। सब, कोई किडनी के पीछे पड़ा है, कोई लीवर के सही पीछे है। पड़ा है, कोई ट्यूमर के पीछे पड़ा है, कोई कैंसर हाँ सेल हाँ के पीछे पड़ा है। अरे कोई इंसान को भी तो इम्पोर्टेंस दो यार। हाँ हाँ हाँ। और पूरी नहीं दुनिया फिर इंसान को फिर छोड़ नहीं के नहीं, डॉक्टर। फिर अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं आप? वेरी गुड क्वेश्चन।
कल मैं बताने वाला हूँ इसको डिटेल हाँ में, शॉर्ट में बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सीडेंट आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसा हाँ हाँ हाँ, पेशेंट है ठीक, जिसको ऑपरेशन जरूरी है, हम बिल्कुल। बस सिर्फ हाँ उनका वो ऑपरेशन। जरूरी, ठीक है, वो जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। हम कंप्लीटली एथिकल प्रैक्टिस करते हैं, कंप्लीटली एथिकल। और आजकल क्या एथिकल का हाँ जमाना ठीक, नहीं है। अगर मैं आपको डरा दूंगा ना, ठीक, तो आप मुझे 5-10 लाख आराम से दे देंगे। मैं रिलैक्स करूंगा ना, आप बिल्कुल बोलेंगे यार दू कि नहीं दू, राइट। लेकिन हम फिर भी बिल्कुल एथिकल बिल्कुल ही बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल 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 सही है। प्रवीण मायने सातारा, प्रवीण कल कल बता दो, डोंट वरी। अरे प्रवीण चिंता ठीक है, मत करना, जितना भी आप दोगे उससे ज्यादा का आपको आरओआई मिल जाएगा, डोंट वरी। कल बताता हूँ ठीक डिटेल। है, ठीक है। अपना फोन नंबर दे देना, फिर आपसे पर्सनल बात करेंगे, ठीक है जी। मेरा फोन नंबर लेके फायदा नहीं है, अभी आपके साथ बात करो, 10 कॉल आ गए, एक भी कॉल नहीं उठाया मैंने। इसके बाद भी सेशन है, मैं कॉल्स उठा ही नहीं पाता हूँ। हमारी टीम रहेगी आपके साथ, डोंट वरी। आप अपने ठीक है, ग्रुप ठीक में है। लिख दो ना कैंसर ट्रीटमेंट, ऐसा लिख दो, तो टीम आपसे बात कर लेगी। कैसे? कैंसर ट्रीटमेंट ऐसा लिख दो। ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू। ठीक है। तो सभी लोग फियर दिखा ओके रहे हैं, सैमसंग बोल जी। रहे हैं सर मेरे साथ भी डॉक्टर ने फियर दिखाया। देखो गाइस, एक बात देखो, फियर रहेगा तो आप इस जन्म में तो ठीक नहीं हो पाओगे। ठीक है, चाहे वो कैंसर हो, एंजाइटी हो, डायबिटीज हो, फियर के ठीक साथ है। पूरी दुनिया में कोई कभी ठीक नहीं हो सकता है, राइट। तो हम तो हाँ जी। पहले फियर निकालेंगे आपका, हाँ, ठीक है। डर निकाल लेंगे। सर सर एक तो बातचीत थी आपके साथ। हेलो। अब प्रियंका रुको रुको, नए लोगों से बात करने दो पहले, बाद में आपसे बात। अरे आप तो 9 बजे के सेशन में रहोगे, तब बात करेंगे आपसे, रुक जाओ। अच्छा, इसके 9 बजे बाद और सेशन फिर दिक्कत है। होगा जी? हाँ, हमारे सेशन चलते रहते हैं, 9 बजे का सेशन। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100 डेज चैलेंज, वो रात को 9 बजे होता है, 9 से 10। नहीं, वो सभी के लिए है या वो लोगों के लिए है जो नहीं नहीं, आपके? वो पेड प्रोग्राम है, जो कल मैं आपको बताने वाला हूँ, 100 डेज चैलेंज, वो पेड प्रोग्राम है। अच्छा 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 अच्छा। उसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़ते हैं, और अपने हाँ स्वास्थ्य को मात्र 1 घंटा जुड़ते हैं और स्वास्थ्य को बदलते हैं। ठीक है, ठीक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आया है? अंजलि। वेर इज अंजलि? अंजलि कहाँ है? प्रवीण मायने, आई कैन टॉक टू यू, क्वेश्चन अगर है तो। प्रवीण मायने सैमसंग प्रीति। प्रीति शेलाट, इज देयर एनी वे टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम विदाउट कंसल्टिंग ए डॉक्टर? प्रीति आप क्या करते हो बताओ। Namaste, sir. Basically, I'm a teacher. वेरी गुड, सुपर, My age is 46 and I live without any medicines. वेरी गुड। बट क्या बात है, पहली लेडी देखी मैंने जो खुद एज बता रही है अपना। वेरी गुड। Thank you. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम? No, I don't have any health issues, sir. सुपर, गॉड ब्लेस यू। तो फिर Thank you आपको so क्या, much. आपको Same to you. क्वेश्चन क्या है, फिर आपका सवाल क्या है? Actually, it's a generalized question just to understand something that suppose if a person is having any problem, then how will that person judge actually what is he or she suffering from? Suppose if I say you are a teacher, right? Yes, If I say how can somebody judge the real potential of a student without ever talking to his teachers or mentors or him? Is it possible? no. Always the actions have to be monitored and Very good, very other good. things. So similarly, Preeti ji, if you really want to know the cause of the disease, because we are root cause treatment specialists, we treat Yes, cancers, diabetes, kidney failures, everything from the roots. So, and these roots will not be visible in the reports, right? So, if yes. you really want to go deep inside and get the real treatment, then you need a doctor who understands all these things. Okay. And we are a team of 40 plus people working on all these things. So, if there is somebody who is having any kind of disease, they should talk to our team and they will help you understand root causes and the treatments as well. Right? Okay. Yes. And Thank you so much. and thank you, Preeti ji, for being here with us in spite of not having disease. I am sure a lot of people are going to get benefited by this root cause treatment. Is it your first day or second day? It's my first day, sir. Oh my God, I missed you yesterday then. Me too. So now I give you punishment. You are a teacher, but I am giving you punishment today. Is it okay?
Fine. So watch the recording of yesterday. You are going to love that. That is the foundation. You will love that foundation. And once you know the Yes, foundation, you can help so many people. definitely, sir. Thank you. Thank you for accepting the punishment. My pleasure, sir. Thank you so Thank you. much. Thank you. Jyotirmay Das says ulcerative colitis is reversible, curable. देखो, let me tell you guys, almost all diseases on planet Earth, let me repeat, almost all diseases on planet Earth are either reversible or curable. Problem is that you never try. Example, diabetic person takes medicine for 20, 30, 40, 50 years. But if I say him, do exercise for 30, 40, 50 minutes every day, he will not do it. Right? But if he does it, suppose if he does a walking every day 1 hour, his diabetes will be definitely better. His tablets will be definitely less. Vinodji, agree or not? But people don't at all work on themselves. Now, this is a simple example. Another example, ulcerative colitis, pancreatitis, they have to work on their mind first. Because all these people, ulcerative colitis, they will be having a lot of anxiety, lot of anger. If I have right or wrong, ulcerative colitis is a Rizwan Hassan. No. Jyotirmay Das. Right, yes or no? I will tell, if you tell me the report, I will tell you your nature and what is happening in your family also. It is so much interconnected. Every cancer have a different mind psychology. Every disease have a different mind psychology. But nobody works on that mind psychology, and therefore people never ever recover. Then Rizwan says, under treatment of pancreatitis, really the pain can reform or return back. Now, Rizwan Hassan, I don't know whether you are saying you are under our treatment, because, excuse me for that, because we have plenty of patients and we have 12 doctors who are managing different patients. So I don't remember everybody by name. But then if you are saying under the treatment of pancreatitis, really the pain can recur. Yes, pain can recur unless the treatment is complete. Great Rizwan, you are under our treatment. Now listen, if you take just a partial treatment, your pain is going to recur. So never stop your treatment unless, this line is very, very important, unless all the root causes are taken care of. So take care of all the root causes, then it will not return at all. Super. सारी बीमारी हमारी अंदर होती है, एकदम बराबर है। क्या हम उस बीमारी को एक्टिव करते हैं? सीके पटेल जी, थोड़ा उसे मैं अलग बना के बताऊंगा। सारी बीमारी हमारे अंदर होती है बोलना सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें बीमार पैदा नहीं किया है। ऊपर वाले ने हमें हेल्दी होने के लिए बनाया था। जैसे अभी प्रीति को हेल्दी रखा है, ऐसा नहीं कि प्रीति पर स्पेशल कृपा है। बट अगर प्रीति ने बहुत टेंशन लिया होता, गुस्सा नफरत पाला होता, तो आज प्रीति भी बीमार होती। राइट? तो भगवान ने हमें हेल्दी रहने के लिए ही पैदा किया है। इट इज रिवर्स। भगवान ने हमें हेल्दी होने का सारा सिस्टम भी दे दिया है। भगवान ने हमको हीलिंग सिस्टम से लेके हर चीज दे दी है, हमने कभी उसका यूज ही नहीं किया। उसको डिब्बा बंद कर दिया, उसको लॉक करके रख दिया, उसको सप्रेस कर दिया, स्टीरॉइड ले लिए और सारा इमोशनल निगेटिविटी भर दी, ताकि हीलिंग सिस्टम हमारा कभी काम ही नहीं करे। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। गुड क्वेश्चन सीके पटेल, वेरी गुड, आई लव दिस। Then can neurological disorders go away? Definitely, definitely. In fact, let me tell you, neurological disorders will be faster to respond, because brain ये अपने आप में सुपर कंप्यूटर है, और वो ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसको आज तक आपने कभी ऑपरेट नहीं किया अपने फायदे के लिए। एंड वी हेल्प यू ऑपरेट दैट सुपर कंप्यूटर ऑल्सो। नर्व डैमेज कैन बी रिकवर्ड। मैंने जो बोला ना, जो पेशेंट हमारे साथ अभी यहां पर है, उनको ऑटो इम्यून नर्व डैमेज ही है। एंड शी इज नॉट हियर। कलीम बानो इज हर नेम। शेखर भाई, आपको पता है ना कलीम बानो यहाँ पे आए हुए करके? हाँ, यस सर। अरे हो, क्या क्या बात है, आप तो यहीं पर हो।
कलीम यस बानो जी, आपके लिए सवाल है ना, यहाँ पर लोग बोलते हैं नर्व डैमेज रिकवर होता है क्या? क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, होता है सर। 100% रिजल्ट हैं। मैं तो सबसे कहूंगी कि सबको आना चाहिए, सबको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं अपने माइंड पे वर्क करना चाहिए। हम हालांकि हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो रॉन्ग डायरेक्शन है। जो आप तक जो मेडिसिन मतलब आप जो करते हैं, मतलब ये सही डायरेक्शन है और हमको ये फॉलो करना चाहिए। वेरी गुड। जो भी हो, इनफैक्ट बीमार हो या नहीं भी हो, हमको तो ये माइंड सेशन, ये माइंड ट्रांसप्लांट करना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है, सबके लिए है। मैं तो सबको एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप सब लोग सर को फॉलो कीजिए। जो भी सर कहते हैं वो 100% राइट है। मुझे बहुत चेंजेस आए हैं, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। तो मैं भी मेरे मन से चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि सबको, सबकी भलाई हो, सब चेंज हो जाए, सब अच्छे रहे। सुपर। और देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला जो मैं बोलना भूल गया था। थैंक यू कलीम बानो। इन्होंने कहा कि माइंड ट्रांसप्लांट करना चाहिए। अरे लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं, और मेन जो इंसान का सबसे जरूरी पार्ट है, जो इंसान को इंसान बनाता है, वो माइंड। और माइंड पर कोई काम ही नहीं करता। एंड आई एम द ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड एज माइंड ट्रांसप्लांट। तो ये मैंने लिखी है, हमारे हमारे जो इंटरनल सर्कुलेशन में रहती है बुक, वो इट इज नॉट फॉर सेल राइट नाउ, बट माइंड ट्रांसप्लांट इज द ओनली थिंग एवरीबडी शुड डू। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो। सो कलीम बानो इज वेरी वेरी परफेक्ट व्हेन शी सेज एवरीबडी मस्ट वर्क ऑन दिस। थैंक यू कलीम बानो, दिस सो वंडरफुल। एंड शी इज विथ अस, वो हमारे हॉस्पिटल में ही है। एंड शी इज गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवांटेज। और मैं बता दूं, हॉस्पिटल में आने से पहले ही उनको फायदा होना शुरू हो चुका है, राइट? यस सर, इसलिए वहां पे घर पे ही चेंजेस हुए थे, मैं यहाँ पे आई हूँ। बहुत सुपर। सारे जो 15-15 डेज का जो सेशन था, मेरा राइट चीक और दोनों लिप्स है ना, सेम में कोई सेंस नहीं था। एक्चुअली दोनों में सेंस भी है और चेंजेस भी हैं। बहुत हार्डनेस था, अभी मेरा राइट चीक लिप्स मतलब सॉफ्ट हो गए हैं। चेंजेस बहुत हैं। आज कलीम बानो के लिए क्वेश्चन है सारे। एक क्वेश्चन और आया है, ये बोलते हैं कि वैस्कुलर डिसीज है, जैसे रेनॉल्ड फिनोमिना है ना आपको, यस वैसे वैस्कुलर डिसीज में फायदा होता है क्या? तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? हाँ सर, 100% फायदा होता है। यस। एलोपैथी में इसमें कोई दवाई नहीं है, उसका कोई आप कहीं भी सर्च कर लो, नॉट क्यूरेबल। यस। उसका दवाई ही नहीं है और क्यूरेबल है ही नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सर के पास इसका क्यूरेबल है, इलाज है। 100% उसका इलाज है। सबको, जो उसको भी है, प्लीज फॉलो सर। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ सब लोग अच्छे रहे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज। एंड शी इज सो स्वीट, पता है? मैं आपको बताऊं, उनको सबसे पहले ना पाव में सेंसेशन ही नहीं था सबसे पहले, राइट ना? पाव में सेंसेशन नहीं था ना कुछ भी। हाँ नहीं सर, पाँव में नहीं, राइट चिक में नहीं, लिप्स पे नहीं। तो उनको बहुत डाउट था पहले, सही में ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा उनको एक काम करो, आप सब कुछ कर चुके हो ना, ठीक है, एक बार खुद पर अंदर से काम करो, और एक बार आपको भरोसा करके ज्वाइन करना चाहिए। एंड शी ज्वाइन इंस्टेंटली, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और वो हर चीज इतना अच्छे से फॉलो करते हैं कि उनको हेल्प करने में बड़ा मजा आता है। सुपर। तो पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज रिवर्सिबल है क्या? डेफिनेटली आपके सामने ही है, रिवर्सिबल है। क्या न्यूरोजेनिक ब्लैडर आफ्टर स्पाइन माइक्रो डिस्केक्टोमी सर्जरी क्यूर्ड? अब ये क्वेश्चन है ना, ये बीमारी नहीं है, ये आफ्टर इंजरी है, तो मुझे बात करना पड़ेगा सैमसंग से। सो करीम बानो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बीच में आप नहीं थे क्या? डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? चलो, शी इज अगेन। नाउ वी हैव गिवन लॉट ऑफ वर्क टू हर। बहुत काम करवाते हैं हम, क्योंकि अंदर से बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन वर्थ है। आसान नहीं है, लेकिन वर्थ है। तो चलिए गाइस, आज यहीं पर रोकते हैं, कल मिलते हैं। कल मैं डिटेल आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, कैसा करते हैं, क्यों करते हैं। वी डू लॉट ऑफ थिंग्स, वी डू जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, देन वी डू स्टेम सेल थेरेपी, ट्रिपल स्टेम सेल थेरेपी, वी डू एपीजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, वी डू सिस्टम रीप्रोग्रामिंग, हार्मोनल रीसेट, सेलुलर रीजनरेशन, सेलुलर एक्टिवेशन, किडनी एक्टिवेशन, पैनक्रेटिक एक्टिवेशन, डिसीज रिवर्सल। हम ये सारी चीजें करते हैं। तो आपको कोई भी बीमारी हो, सिर्फ जो मैंने भी सैमसंग का जो सवाल था, उनका वो बीमारी नहीं है, उनका शायद स्पाइन का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद का प्रॉब्लम है।
मैं उनको सिर्फ यस नहीं बोल रहा हूं, अभी उनके उनसे बात करके यस बोलूंगा कल मैं जब उनसे बात करूंगा, लेकिन आप सबको बता दूं, रिजल्ट्स विल बी देयर इन ऑलमोस्ट एवरी केसेस। किसमें कितना आएगा वो तो हर केस में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन दिस अमेजिंग डे। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट। कल एग्जैक्टली मिलेंगे। कल थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, कल हम मिलेंगे और डिटेल में बात करेंगे इलाज के बारे में। कल सबको रेडी होकर आना है। आई विल बी आस्किंग यू टू ज्वाइन अ प्रोग्राम। वी हैव मेनी प्रोग्राम्स, बट हम आपके लिए रेलेवेंट क्या है श्योर, देखेंगे। थैंक यू, बाय डॉक्टर, बाय। थैंक यू, थैंक यू। हम आपके लिए रेलेवेंट क्या है देखेंगे, वैसा आपको एडवाइस करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से हेल्दी लाइफ एंजॉय करो। तो आप में से कितने लोग हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो? राइट, हेल्दी। प्रीति, आपको तो सबसे पहले लिखना चाहिए। बट प्रीति, यू डोंट नीड 100 डेज चैलेंज, बट फिर भी कल आना, मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन देने वाला हूं। जो भी हेल्दी लाइफ एंजॉय करना चाहता है कल जरूर आइएगा। एंड हाँ, मैं अभी से बता दूं कि प्रोग्राम जो होता है, ये तो मैं फ्री ले रहा हूँ 3 दिन का, बट वो प्रोग्राम पेड होता है। तो पेड प्रोग्राम के लिए तैयार होके आइएगा, बिकॉज हमको और डीप ट्रांसफॉर्मेशन जाना है। कल एक एक्टिविटी भी होगी, एंड कल जो बचा हुआ पोर्शन भी कवर होगा, एंड कल इस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। राइट। सैमसंग कल मैं आपको बताऊंगा। आपको आज मैं कोई उम्मीद नहीं दे रहा हूं, बाकी सबको मैं हाँ बोल रहा हूं, सिर्फ आपको मैं कल बताऊंगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।